everyone, welcome to Biomics. In the last class, we have discussed about some of the questions of cell cycle regulations which are asked in CSIR Life Science Net exam. Today is the second part of the series of video from the topic of cell cycle regulation. So let's get started with the question. So here what this question is asking, it is asking about one function of this phosphatase which is known as PP2A phosphatase. So what is this PP2A phosphatase? This PP2A which is present, it is regulating the CDK1 kinase. Okay, it is regulating the CDK1 which is present in the M phase. So let us see what this question is telling. Protein phosphatase 2A is a critical regulator of CDK1 substrate during cell cycle. So during the cell cycle, ये जो cell cycle के time पे PP2A जो है which is a phosphatase, it is regulating the CDK1. Okay. The B55 subunit of PP2A. This PP2A जो present है इसका एक subunit है जो कि है B55. What it is doing? It is influencing the substrate selectively. So ये जो substrate इसके लिए substrate कौन है? It is CDK1. So ये PP2A का B55 subunit इस substrate को influence कर रहा है. Selectively, localization and regulation of the enzyme. Given below are few statements about PP2A and its regulation during M phase of the cell cycle. यहाँ पे कुछ regulation है PP2A का during the M phase of the cell cycle. So we have to identify the correct one. Okay. PP2A, first option is PP2A B55 activity is high during interphase, but inhibited during early mitosis when mCDK activity rises. So what it is telling? So यहाँ पे एक बात we have to understand this thing. This CDK1 which is present and M cycline, they are in the inactivate condition before the M phase. During the interphase, they are in the inactivated form. Why? Because there is a kinase which is known as V1 kinase. What it is doing, as it is a kinase, what it will do? It will phosphorylate. The type of phosphorylation it is doing, it is for the inhibition. Okay, here there is another one kinase which is known as CAK, which is known as CDK activating kinase. This is an activating kinase. What the CAK does, it will phosphorylate threonine 161. Okay. But due to this phosphorylation also there will be no activation of this M cycline and the CDK1. Why? Because it is having a inhibitory phosphate with it. Okay. When the right time comes, जब कभी भी एक right time आएगा, during this time the inhibitory phosphate जो present था उसको remove करेगा. अगर phosphate को remove करना है then what is needed? यहाँ पे needed है phosphatase का. Which is that phosphatase? CDC25. ये जो CDC25 जो present है, it is a phosphatase. What it does? It removes the inhibitory phosphate from tyrosine 15. Okay. If it is removing this phosphate, inhibitory phosphate, during this time the activating kinase which was phosphorylating and helps in the activation of this mCDK and the mCDK as well as the cycline. So this will be activated. Okay. So what happens? This PP2A, ये जो PP2A जो present था, ये क्या कर रहा था? It was inhibiting the CDC25 phosphatase. Okay, when it was inhibiting during the interphase. क्यों इसे इंटरफेज में इनहिबिट कर रहा था? क्योंकि ये राइट टाइम नहीं था सेल को एम फेज में जाने के लिए, इसीलिए ये PP2A इनहिबिट कर रहा था CDC25 फॉस्फेटेज को, ताकि वो इनहिबिटरी फॉस्फेट को रिमूव ना कर सके. ओके, but when the right times comes, the work of PP2A is inhibited by some other protein. यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो PP2A जो प्रेजेंट है, PP2A का B55 जो प्रेजेंट है और B56 जो प्रेजेंट है, इन लोगों का कंसंट्रेशन हाई रहता है ड्यूरिंग द इंटरफेस. ये जो है हमारा इंटरफेस है, इट इज द इंटरफेस. ड्यूरिंग दिस टाइम द कंसंट्रेशन इज हाई. बट जैसे कि वो एम फेज में पहुंच गया, सेल जब एम फेज में पहुंच गया, ड्यूरिंग दिस टाइम वी कैन सी हियर द कंसंट्रेशन इज लो, इट्स कंसंट्रेशन इज ड्रॉपिंग. ओके, ड्यूरिंग द एम फेज, क्योंकि एम फेज में आने के टाइम
the CDC 25 need to work. This CDC 25 phosphatase need to work because it has to remove the inhibitory phosphate. Okay, जैसे कि M phase आ गया. After completing the M phase, it has to go to the NA phase. During this time, again it will be activated. That means this PP2A will be, its concentration will be high, because now during this NA phase condition, this CDK1 is not needed in this condition. That is the reason PP2A is again rising during the NA phase condition. Okay, so here you can see this PP2A which is present, it is inhibiting the CDC25 phosphatase. Okay, along with it there is another one kinase also. Here we can see when there is activation of the cyclin D and CDK1 with the phosphorylation of the threonine 161 by the CAG. During this time what happens? By a unknown mechanism, a kinase which is known as great wall kinase, it is activated through the phosphorylation. जैसे कि ग्रेट वॉल काइनेज का phosphorylation हो गया, during this time it will phosphorylate ARPP19 और ये ARPP19 क्या करेगा? It will inhibit the PP2A. Okay, M phase में जब M phase आएगा, during this time this PP2A does not have any work because during this time this CDC25 need to work. So ये जो PP2A जो कि inhibit कर रहा था CDC25 को, इसको भी कोई inhibit करना चाहिए ताकि वो CDC25 को inhibit ना कर सके. So here this kinase is working for the inhibition. Okay, so now let us see the options. Option A, PP2A B55 activity is high during interphase. हाँ, अभी ही हम देखे थे interphase में इसका concentration high रहेगा, but inhibited during early mitosis when MCDK activity rises. Yes, this is the correct option. जैसे कि option A correct है, so we can eliminate the option number C. Okay, now B, MCDK1 turns off PP2A B55 via the phosphorylation of an intermediary protein kinase called great wall. Yes, this MCDK1 when it is activated, what it is doing, it is turning off the PP2A B55 through the phosphorylation mechanism of an intermediary kinase which is known as great wall. So B option भी correct है. So we can now eliminate this one. Next is the C option. ये जो C option है, it is contradictory with this B. So B and C, it cannot come together. So क्या बोल रहा है ये? MCDK1 turns on PP2A B55 via the phosphorylation of an intermediary protein kinase called great wall. It is not turning on this PP2A, it is turning off the PP2A. It was inhibiting this PP2A. Okay. Now option number D. When NA phase is initiated and MCDK1 activity declines. ये बोल रहा है कि एना फेज जब आ जाएगा, एम फेज से मेटा फेज से जब सेल साइकिल एना फेज में कन्वर्ट होगा एंड MCDK1 एक्टिविटी डिक्लाइंस और MCDK1 का एक्टिविटी जब डिक्लाइन हो जाएगा, इट प्रमोट्स डीफॉस्फोराइलेशन ऑफ CDK1 सबस्ट्रैक्ट. ये बोल रहा है कि CDK1 का जो सबस्ट्रैक्ट जो प्रेजेंट था इसको डीफॉस्फोराइलेशन करना चाहिए. यस, बिकॉज जब कभी भी फॉस्फोराइलेशन CA के वजह से जो फॉस्फोराइलेशन प्रेजेंट था, ड्यू टू दिस इट वाज एक्टिवेटेड. तो ये एक्टिवेटिंग फॉस्फेट को अभी रिमूव करना है बिकॉज दिस CDK1 and now does not need to be activated. Okay, so option number D is also the correct one. So A, B and D is the correct option. A, B and D is present in option number A. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे कुछ एंजाइम्स दिया गया है और उसका फंक्शन दिया गया है. ठीक है, सो यहाँ पे पूछ रहा है कि ये जो CDK1 जो प्रेजेंट है ये कहाँ पे रेस्पॉन्सिबल है. ये CDK1 जो प्रेजेंट है, लाइक वी कैन सी हियर, CDK1 जो प्रेजेंट है, इट इज ड्यूरिंग द M phase, that is it is required during the mitotic entry. So A हमारा हो गया 4. Next is APC CDC 20. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो APC जो प्रेजेंट है ये CDC 20 के साथ भी बाइंड कर सकता है as well as it can bind with the CDH1. अगर ये CDC 20 के साथ बाइंड कर रहा है then it will go from metaphase to एनाफेज. सो द बी ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4. ये जाएगा मेटाफेज से एनाफेज. ओके, ऑप्शन नंबर 1 इज 3. ओके, नाउ दैट इज CDC2. ये जो CDC2 जो प्रेजेंट है वेयर इट इज नीडेड ड्यूरिंग द S phase entry.
यहाँ पे हम देख सकते हैं CDC2 जो प्रेजेंट है, it is required during the S phase entry. It is required during the G1 S phase, that means in the late G1 phase and during the S phase. Next is the Aurora B. Aurora B जो kinase जो present है, it is required during the cytokinesis. That means when the cell is dividing, during this time there is cytokinesis formation, due to which there is the formation of the furrow and the cell is divided into two cells. Okay, so here यह हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. Features mentioned below are important for the segregation of homologous chromosome in meiosis 1. ये पूछ रहा है कि कैसे homologous chromosome हो रहा है हमारा meiosis 1 में. कुछ statements यहाँ पे दिया गया है, इनमें से कौन सा statement correct है. A is the synaptonormal complex formation between homologous chromosome. यहाँ पे जो homologous chromosomes जो present है, like this is the chromosome 1, this is the chromosome 2. यहाँ पे जो homologous chromosomes जो present है, इन दोनों को एग्रीगेट करने के लिए साइनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है ड्यूरिंग द प्रोफेज. व्हाट हैपेंस एंस यहाँ पे ड्यू टू दैट साइनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होगा बाय विच the parts of the first chromosome will be transferred to the second and from the second it will be transferred to the first. So here crossing over takes place. So the first option is the correct one. Next is degradation of cohesin at the chromosome arms. ये बोल रहा है कि क्रोमोसोम का आर्म्स में कोहेसिन प्रोटीन जो प्रेजेंट था उसका डिग्रेडेशन होगा. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रोटीन्स जो प्रेजेंट है, दिस प्रोटीन्स विच आर प्रेजेंट बिटवीन द टू सिस्टर क्रोमैटिड्स, इन दोनों को अटैच करने के लिए कुछ प्रोटीन्स का रिक्वायरमेंट है. सो ये जो प्रोटीन्स जो प्रेजेंट है इसको बोलते हैं कोहेसिन प्रोटीन. ये बोल रहा है कि उस स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है कि मियोसिस 1 में ये जो कोहेसिन जो प्रोटीन है इसका डिग्रेडेशन हो रहा है उनके आर्म्स में. इज इट सो? यस, ये जो प्रेजेंट है, ये जो आर्म्स जो प्रेजेंट है, यहाँ से वो कोहेसिन प्रोटीन का डिग्रेडेशन हो गया. But it is not degraded in the centromeric region. It is degraded in the arms. So the statement is also the correct one. Degradation of cohesin at the centrosome arms. Chromosome arms. So this is the correct one. Next, see. Retention of cohesins at the centromeres. Yes, the cohesins which are present, they are having the retention. That means वहाँ पे उसका डिग्रेडेशन नहीं हुआ इन द सेंट्रोमेरिक रीजन. सो दिस इज ऑल्सो द करेक्ट वन. नेक्स्ट ऑप्शन डी इज बाय ओरिएंटेशन ऑफ काइनेटोकोर ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स. ये बोल रहा है कि जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है उसका बाय ओरिएंटेशन हो रहा है इन द ड्यूरिंग द काइनेटोकोर. ये जो बाय ओरिएंटेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स होगा, ये होगा हमारा मियोसिस 2 में. ओके, यहाँ पे किसका मियोसिस 1 में किसका बाय ओरिएंटेशन होगा, इट विल बी ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम. ओके, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसका जो यहाँ पे क्या हो रहा है इन द मियोसिस 1, व्हाट हैपेंस, द होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर बाय ओरिएंटेड. बट यहाँ पे हम देख सकते हैं एनाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2, यहाँ पे जो बाय ओरिएंटेशन जो हो रहा है इट इज ऑफ द सिस्टर क्रोमैटिड्स. ओके, सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज द इनकरेक्ट वन. ए, बी और सी करेक्ट ऑप्शन है. ओके, discuss the next question. The following statements were made about cell cycle regulation in fission yeast. यहाँ पे कुछ statements दिया गया है fission yeast के बारे में. चलिए देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है. A CDC25 mutant cannot enter mitosis due to its inability to remove the inhibitory phosphate. Yes, this is a correct statement because अगर ये CDC25 mutant है, what was the CDC25? ये CDC25 जो present है, it was a phosphatase which was removing the inhibitory phosphate, which was done by which phosphate was given by the V1 kinase. Okay, if this CDC25, अगर ये CDC25 खुद ही mutated है, क्या ये remove कर सकता है वो inhibitory phosphate को? नहीं. अगर वो inhibitory phosphate को remove ही नहीं कर सकता है तो how can it enter into the next phase? Okay, so it cannot enter the mitosis. So option A is the correct one. Next is the option B. V1 consistently maintains the CDK in a active state to maintain cell size during cell cycle. ये जो V1 जो present है, ये क्या कर रहा है, ये क्या consistently maintain कर रहा है in the active state? No, it is keeping the CDK in the inactive state. Okay, so B option is the incorrect one.
CAK phosphorylation mediated phosphorylation of threonine 161 residue of CDC2 is necessary but not sufficient for CDK to be active. यहाँ पे क्या हो रहा था, CDK का जो एक्टिवेशन हो रहा था, इट वॉज ड्यू टू CAK क्या है, CAK जो प्रेजेंट है, इट इज एक्टिवेटिंग काइनेस, ये फॉस्फोराइलेट कर रहा था। उसी के साथ CDC25 का भी काम था। दैट मीन्स CDC25 जो फॉस्फेटेज है, इट वॉज रिमूविंग द CDC25 वॉज रिमूविंग द इनहिबिटरी फॉस्फेट। सो ये भी ऑप्शन जो है करेक्ट है। लाइक CAK जो प्रेजेंट है, इट इज रिक्वायर्ड बट इट इज नॉट सफिशिएंट, इसको किसी और प्रोटीन्स का भी रिक्वायरमेंट है, लाइक द CDC25। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी, activation of SIC1 in G1 allows the cycline CDK that is present in the cell to initiate DNA replication. ये जो SIC1 जो present है, what it is doing, this SIC1 is responsible for inhibiting the replication. Okay, यहाँ पे बोल रहा है कि activation of SIC in G1 allows the cycline CDK that is present in the cell to initiate DNA replication. ये initiate नहीं कर रहा है DNA replication को, ये inhibit कर रहा है DNA replication को when it is present in the G1 stage. Okay, so this is the incorrect statement. Next option number E. ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, SIC mutant exhibit activation of premature DNA replication from fewer origins and extensions of the duration of S phase. Yes, this is the correct option. जब कभी भी SIC1 का म्यूटेशन हो गया है, अगर ये काम ही नहीं कर रहा है, तो ये क्या करेगा, प्रीमेच्योरली रेप्लिकेशन जब होना चाहिए उससे पहले भी ये मैच्योरेशन कर लेगा, or it can help in the activation of the DNA replication before it is in the mature form. So option A, C and E are the correct. Option number B में present है A, C and E. Okay. Now let's discuss this next question. Following statements were made about cell cycle regulation. यहाँ पे कुछ statements दिया गया है जो कि है cell cycle regulation के बारे में. First one is de novo synthesis and destruction of cyclin B are essential for cell cycle progression in yeast. Yes, this is essential for the cell cycle progression. Cyclin B का destruction भी चाहिए as well as synthesis भी चाहिए. Next is option number B. De novo synthesis and destruction of cyclin B and the related cyclin dependent kinase are essential for cell cycle progression. यहाँ पे cyclin का डिग्रेडेशन एज वेल एज सिंथेसिस हो रहा है, लेकिन CDK का सिंथेसिस और डिग्रेडेशन नहीं हो रहा है, ये थ्रू आउट द सेल साइकिल प्रेजेंट रहता है, लेकिन इसका हो रहा है एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन. ओके, सो ऑप्शन बी इज द इनकरेक्ट वन. नेक्स्ट इज ऑप्शन नंबर सी. CDK एक्टिविटी इज रेगुलेटेड बाय बोथ एक्टिवेटिंग एंड इनहिबिटरी फॉस्फोराइलेशन. यस, यहाँ पे जो एक्टिवेटिंग फॉस्फेट जो प्रेजेंट है, दैट इज द CAK विच इज CDK एक्टिवेटिंग काइनेस, और इनहिबिटरी फॉस्फोराइलेशन जो हो रहा है दैट इज बाय द V1 काइनेस. ओके, सो ये ऑप्शन करेक्ट है. नेक्स्ट, RB फंक्शन एज ए इनहिबिटर ऑफ G2 M ट्रांजिशन. सो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, A और C करेक्ट है. जैसे कि A और C करेक्ट हो जाएगा, वी कैन एलिमिनेट दिस टू ऑप्शन. ओके, ये जो RB जो प्रेजेंट है, इट इज वर्किंग एज ए इनहिबिटर ऑफ G2 M. ये RB जो प्रेजेंट है, इट इज वर्किंग इन द G1 S phase ट्रांजिशन, नॉट इन द G2 M phase ट्रांजिशन. नेक्स्ट E. Inactivation of SIC1 is essential for transition into S phase. Yes, जैसे कि हम inactive कर लेंगे SIC1 को, it will help the cell to go into the S phase, जहाँ पे कि होगा DNA का replication. Okay, so option A, C and E are the correct statement. यहाँ पे option C पे है A, C and E. Okay, now let us discuss the next question. During mitosis in eukaryotic cell, incorrect kinetochore attachments are corrected by a system of trial and error. यहाँ पे जो माइटोसिस के टाइम जो काइनेटोकोर का अटैचमेंट अगर इनकरेक्ट हो जाएगा तो उससे कैसे करेक्ट कर रहे हैं, दैट इज बाय द ट्रायल एंड एरर. The tension-based mechanism acting at the kinetochore is linked with ensuring that sister chromatid pads are properly oriented at the spindle. Which one of the following kinase is tethered to the inner kinetochore and phosphorylates the microtubule attachment site, including the NDC-AT complex, to regulate sister chromatid attachment in a bi-orientation manner? So,
यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कुछ टेंशन प्रेजेंट रहेगा बिटवीन द सिस्टर क्रोमेटिड एंड द काइनेटोकोर. ओके, सो फर्स्ट वी विल सी व्हेन देयर इज लो टेंशन. जब कभी भी एक सिस्टर क्रोमेटिड का पैर इज अनअटैच्ड टू द स्पिंडल, अगर सिस्टर क्रोमेटिड स्पिंडल के साथ अटैच नहीं होगा or it's attached to just one spindle pore, there is little tension between the outer and the inner kinetochore. ये जो outer kinetochore present है और inner kinetochore में अगर present है, इन दोनों के बीच there will be low tension curve. जबकि एक sister chromatid if it is unattached to the spindle, और जबकि वो एक ही spindle pole के साथ attached होगा. Okay. ड्यूरिंग दिस टाइम व्हाट हैपन्स, ये जो एरोरा बी जो काइनेज जो प्रेजेंट है, यहाँ पे एरोरा बी काइनेज जो प्रेजेंट है इज स्कैटर्ड टू द इनर काइनेटोकोर एंड व्हाट इज दिस, इट फॉस्फोराइलेट. ये जो एरोरा बी काइनेज जो प्रेजेंट है इट विल फॉस्फोराइलेट द माइक्रोट्यूबल साइट. ओके, फॉस्फोराइलेट द माइक्रोट्यूबल साइट और माइक्रोट्यूबल अटैचमेंट साइट इंक्लूडिंग द NDC80 कॉम्प्लेक्स. यहाँ पे जो ये ब्लू कलर का जो पोर्शन जो प्रेजेंट है इट इज द NDC80 कॉम्प्लेक्स. ये एरोरा बी काइनेज जो प्रेजेंट है वो NDC80 को भी फॉस्फोराइलेट करेगा एज वेल एज माइक्रोट्यूबल अटैचमेंट साइट को भी फॉस्फोराइलेट करेगा. ओके, अगर ये फॉस्फोराइलेट करेगा तो क्या होगा, thereby reducing the affinity of microtubule binding. Microtubules that associate and dissociate rapidly and the attachment is unstable. जब कभी भी यहाँ पे फॉस्फोराइलेट होगा, यहाँ पे इन दोनों का अटैचमेंट ठीक से नहीं होगा, दे विल बी डिसोसिएटेड. ओके, बट जब इन दोनों के बीच टेंशन ठीक रहेगा, टेंशन और देयर विल बी हाई टेंशन, दैट मीन्स यहाँ पे जो एरोरा बी जो काइनेज जो प्रेजेंट है, what it will do, it will not phosphorylate the NDC80 as well as the microtubule attachment site, जिसके लिए कि यहाँ पे एक फोर्स जनरेट होगा जो कि सिस्टर क्रोमेटिड्स को दे विल बी पुल टूवर्ड्स द टू ऑपोजिट पोल. सो यहाँ पे क्या पूछ रहा था, इनमें से कौन सा काइनेज रिस्पॉन्सिबल है फॉर फॉस्फोराइलेटिंग द NDC80. ये जो काइनेज जो प्रेजेंट है इट इज द एरोरा बी काइनेज. ओके, discuss the next question. Following statements were made about cell cycle regulation in eukaryotes. ये बोल रहे हैं कुछ यूकैरियोट्स में कुछ सेल साइकिल रेगुलेशन का बात बोल रहे हैं. First is that activity of maturation promoting factor MPF rises and falls synchronously with the concentration of cyclin B. Yes, this MPF which is present, it will rise and fall with the concentration of cyclin B which is present during the M phase. Next is the CDC25 phosphatase mediates removal of phosphate from the inhibitory tyrosine residue Y15 to yield high active MPF. This is also the correct option because the CDC25 जो है it is a phosphatase जो कि inhibitory phosphate जो present था that is in the tyrosine 15 which was done by V1, ये जो CDC25 है उसको remove करेगा. Okay, next is the MPF. Specifically phosphorylates and dephosphorylates lamine A and C but not lamine B. This is the incorrect one because ये जो phosphorylation जो होगा it will be towards the lamine A, B as well as C. यहाँ पे बोल रहा है कि ये A और C को करेगा लेकिन ये lamine B को नहीं करेगा. So this is the incorrect statement. ये जो है phosphorylation and depolymerization जो है lamine B का भी होगा. Next is option number D which is known as MPF phosphorylates H1 histone. Yes, this MPF जो present है it will help in the phosphorylation of the H1 histone. Next is option E. In saccharomyces probe overexpression of V1 protein, जब कभी भी V1 protein का overexpression होगा decreases the length of G2. What it will do? It will decrease the length of G2 phase and extends the period of M phase. और ये बोल रहा है कि ये extend करेगा M phase को. No, when this V1 जो है इसका over expression होगा during this time it will increase the phase of G2. Okay, so this is the incorrect option. Option E is the incorrect option. Option A, B and D are the correct. So option B is the correct option. I hope you can solve these questions now from this topic. So thank you everyone for watching this video till the end, and if you like this video please do not forget to subscribe. Thank you.